Hello guys, a very good evening to all of you, and I welcome all of you to today's session of INICET discussion. And I won't ask how was the exam because I already know. 2 3 subjects were bounces like pharma, PSM, Opta. Now see, whenever we talk about INICET, there are 3 institutes, right? PGI, GIPMA, and AIMS. Now, if you leave PGI, AIMS and GIPMA, they are notorious. They're notorious in some exams, and it's not that they have done it only this time. They had been doing it since ages. For some subjects, they'll ask you weird questions, which even the forget about an MBBS student, even an MD student who is pursuing second year or third year would not be able to answer those questions. Again, why do they ask such questions? Because these exams are exams of elimination. I mean, they're not there to take you in. They're there to send you out so that whoever is remaining, they will take them into the institutes. So guys, I hope all of you are doing well, and yeah, let's begin with the questions. And I have collected a few questions. If you have any extra questions that you can remember, do let me know. Please help me in completing the question and the options as well. So let's begin, guys. All right, so first one. So we'll discuss, quick. I'll be quick, and so that we cover the questions. If you know, hello, Sushmita. I'm good, thank you. See, which of the following is new drug approved for treatment of Rett syndrome? Now, see, such MCQs, if you could not answer in the exam, you don't need to fret over it. अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, because this drug, your answer is Trophytide, and this was approved just in the March 2023. So if you're not able to answer such an MCQ, it's okay. It's not out of this world. But if it is repeated next time, you should be able to answer this. So guys, do let me know. Do you know what are the other options? Hello, Ayush. It's good to see you, all of you as well. Now, if you remember the other options, please do help me in completing the options. If you have an idea, do let me know. If you don't know, then I can just move ahead. Right, so Trophytide, it's approved for Rett syndrome. There is nothing much I can say about this drug. The mechanism of action is unknown. I don't know what is its mechanism. We don't know. And what is this drug? It's tide, it's a tide. So it's a peptide. It's a peptide which has a very, very large name that I can't remember. Nobody can remember. One was a gepant. Okay, very good. At least I get something. Gepant. So all of you know gepant, these are used in migraine. See why we need to know about other options, because in future they can ask MCQs on those options, right? So gepant, olkegepant and rimegepant, these are all used in migraine. Any other, guys? Any other? Do you remember any other option? So anyways, if you remember other options, do let me know. So one, this is a peptide, and though it's a peptide, it is still given by oral route. The route is oral, right? Migraine, yeah. So guys, I'll do a detailed discussion on this as well later. A patient was started on a mood disorder and he developed priapism. The causative drug is. Now this is the earlier one. It was a difficult MCQ. I understand that you could not have solved that, but this is an easy one, guys. Titans. The causative drug is an easy one. So what is the answer, guys? What did you mark for this? A patient was started on a drug for mood disorder. He developed priapism. And what is a causative drug? It's an easy one. It's a fairly easy one. It's not a difficult one. Brain is burned out. I can understand. I can understand specifically after giving such an exam. INICET exam. All right. Come on, guys. At least some of you can comment. What is the answer? Patient was started on drug for mood disorder. He developed priapism. See, guys, here, answer is B, Trazodone. See, Trazodone, it can cause
Priapism. So I've taught you this is secondary use is an erectile dysfunction. Now this is something we have discussed. I've discussed about this. It can cause priapism. Venlafaxine, its side effect is erectile dysfunction. Mirtazapine, bupropion, both these drugs, they do not cause erectile dysfunction. So Trazodone was the answer, right? So there is nothing much to ask here. I have collected this question. True about therapeutic index of a drug is. Now this is the options I have collected. So first of all, let me know if the options are correct or not. Denote safety and efficacy in population, denote safety and efficacy in individual. Option C, ratio of median, not medial, it is median lethal dose in 50% of population to median effective dose in 50% of population. Are the options correct, guys? Are the options correct? And do let me know about the third option, if you remember any third option. I mean, the fourth option. Do you guys remember what was the fourth option? Now, I'll tell you, those who have gone for option C is not the right answer, guys. Option C is not right. Option C is not right. Now, again, this is not a difficult MCQ. This is an easy one. The only thing is you have to be careful while reading the question, because you see, lethal dose in 50%, median lethal dose in 50% of population. Can you kill 50% of population? No. It is in 50% of animals. So C cannot be right. C cannot be right. C cannot be right. They asked for range. They asked for range. What range did they ask, guys? See, here I don't know what was option D. If you ask me what could be the answer, what could be the answer based upon these options A, B, and C, A is a better answer, denote safety and efficacy in population. Though primarily therapeutic index is for safety and not for efficacy. But anyways, so C will not be the answer because population. Now these are the options that I've got, right? These are the options. Option D, option D. Any one of you guys, if you know option D, you let me know in the comment box so that I can complete the question. See, so the AIMS, PGI, GIPMO, these INICET questions, some of them, they're twisters. Like here they gave population, and if you've done this wrong, this is how the INICET exam is misleading a lot of times, right? Graph used for vancomycin dosing is, right? These are the four options I've got: Halstead graph, Salazar graph, nomogram scale, and Kitsko scale, right? So did any of you attend this question? Could any one of you find the answer? Okay, 10. GIP and option A was that ended with 10. Acha, another one ended with 10. Okay, I got it. If it ended with 10, it was Lesmiditen. Lesmiditen is also used in migraine. Lesmiditen was also used in migraine. And one was MAB. So that MAB can be, was the MAB Arenumab? Tell me this. Was the MAB Arenumab? Then what will happen if you're saying there was N, it is mostly Arenumab or Aptinizumab, Premanizumab, Galcanizumab. It can be Arenumab, Premanizumab, Galcanizumab, Aptinizumab. So any one of these would be in the option. And as you said, Numab. If it was Numab, that means these were not.
It was Erenumab. Again, Erenumab is also used in migraine. Now see guys, this MCQ, even if you don't know the answer, you could have solved it, because we have discussed these drugs in migraine. I've taught you this: Gepant, Lasmiditan, Erenumab. These are all drugs of migraine. It was Eptinezumab. Okay, Eptinezumab. So again, it's a drug of migraine. So by ruling out, you could have solved. Even a lot of times, we rule out the options. Anyway, so we have got this question. Thank you guys. Thank you. Thanks a lot. All right, graph used for vancomycin dosing is nomogram scale. See, nomogram scale is a scale that depends upon the creatinine clearance. So based upon creatinine clearance, I will give a particular dose of vancomycin, because vancomycin is excreted by kidney, plus it itself is nephrotoxic, right? To avoid toxicity based upon creatinine clearance. So there is a nomogram, which I'll tell you later as well, right? So nomogram is correct, which is true about Keynote 189 trial. Now this was the most absurd MCQ that I've seen in the last 5 years. They have asked sometimes earlier as well, right? Achha, I don't know. I thought, achha, nomogram was in question. Okay, nomogram. Okay, let me know what was the question. Okay, clinical therapeutic index. Okay, so anyways, that means it was nomogram used for vancomycin dosing is. So are these options correct? Halsted, Salazar, and Kitsko. Okay, anyways, so do you know any other name? If you know any other option, because A, B, and D, I don't think they're used for vancomycin. All right. Even if the previous question was, there was clinical therapeutic index, clinical therapeutic index, no matter how you put it, it's same. There is not much difference. What is true about Keynote 189 clinical trial? Now again, this is a difficult MCQ. The reason being, there are many clinical trials which are being done specifically with anti-cancer drugs. Now, why are we doing these clinical trials with anti-cancer drugs? Because we have a lot of new drugs which have come into existence. These are immune checkpoint inhibitors. They redirect our immune system towards the cancer cell, and it's an amazing way of treating cancer, right? That is the reason why nowadays, for treatment of renal cell cancer, my most preferred drug has become pembrolizumab. Earlier, you remember, I have taught you it was bevacizumab or sunitinib, but now it has become pembrolizumab. That is the reason why for any cancer and every cancer, wherever possible, we are trying our best to use an immune checkpoint inhibitor. And there is another drug which is used in non-small cell lung cancer, that is pemetrexed. Another drug is used in NSCLC, pemetrexed. Keynote 189 trial, it was regarding the use of pembrolizumab plus pemetrexed. Option D, chemotherapy, pembrolizumab plus chemotherapy. That chemotherapy is pemetrexed. So I'll be using only pembrolizumab, and I'll be using pembrolizumab plus pemetrexed to see the response. The good thing about immune checkpoint inhibitors is they're nowhere near the older anti-cancer drugs as far as toxicity is concerned. They're not that toxic. I understand, guys. I understand
that the pharma questions, these were difficult. And anyways, it's a difficult one, as I'm saying. It's a difficult one because there are many clinical trials. And as an aspirant for NEET PG or INICET, possibly you cannot go through the data of each and every clinical trial, and it is humanly not possible. So understand one thing, such questions are not rank deciding questions. Because when you don't know, you don't have any idea. Because you see, when there is an exam with 200 questions, the type of MCQs they have asked here, if I've attempted 170, it's a good attempt in such a paper. If it is an easy paper, I need to increase it to 180, 190 if possible. But in such a paper, if you have attempted 170, so you have that 25, 30 questions, if you can leave, it's okay. Otherwise, negative marking will hurt you. Now, this is an easy one, guys. This is an easy one. There is no excuse for not solving this question. Right? Drug used for trastuzumab resistant HER2 positive breast cancer is. This is an easy one. All of you know the answer here. Right? Drug used for treatment of trastuzumab resistant HER2 positive breast cancer is. So, what did you mark, guys? Okay, Keynote was there. It was 0 to 4. It was because I've got a lot of comments, and most of the comments were regarding 189, Keynote 189 trial. Most of what I have got. Anyways, so HER2 positive breast cancer. See, guys, HER2 positive breast cancer, the drug of choice is trastuzumab, and in case there is no response, I go for a drug called as lapatinib. Now we have discussed this. We have discussed this in marrow, right? It's an easy one, as I said. A diabetic patient was started on drug that decreased HbA1c from 7.6 to 6.8. She started complaining of itching around the vulvovaginal area. Which drug was she started on? Now, this is an MCQ that was asked around 8 years back. 8 years back, it was NEET PG or All India PG, I don't know. But it's a very old PYQ. It's a very old PYQ. But nevertheless, I've taught you this in the class. The answer, all of you know, it's canagliflozin. And this female has developed candidiasis, vaginal candidiasis, and you know the most frequent presentation of vaginal candidiasis is pruritus that can be seen, and UTI, vaginal candidiasis, these are all seen with canagliflozin and other drugs because of increase in glucose in the urine. So anyways, this is, what can I say? This is an easy one. This is an easy one. So I've collected around 19 questions, and out of those 19, around 13 to 14 questions, they are easy one. Around 5 questions are difficult. Around 5 questions are difficult, and it's okay. It's okay. Osimertinib is used in NS, non-small cell lung cancer with mutation due to. Now, this is a difficult one. This is a difficult one, and I've covered this in the last year in the Delta videos about osimertinib. Is an EGFR blocker, EGFR tyrosine kinase blocker, and the answer is T790M mutation. Now see, who asks such kind of questions? See, I look at this question and I can smell it. I can almost smell it. Who, किसका हाथ है इसके पीछे? इसके पीछे जिपमर का हाथ है. Jipmer, they love to ask such MCQs on mutations. Time and again, see, Jipmer has asked a lot of MCQs on mutations, like they have asked about CML mutation in the past. So whenever it is about a mutation, acha, one option is T890M mutation. Any other option you remember, guys? Any other option you remember? So as I was saying, right, CML mutation, they have asked about T315I mutation. It has been asked twice by Jipmer. So the moment I look at a mutation and drugs, which is very difficult to answer, is Jipmer. They love to ask.
Threonine to methionine, two options were there, only location of mutations were different. Okay. Okay. T890M mutation. Okay, so L858R mutation was not there. Okay, I got your point. So option B was also T something M mutation. D was also T. Acha, two were there. See, L858R, 8R, LR mutation was there or not? Did you have LR mutation? Anyways, if you get the idea, do let me know, right? Which of the following statement is true regarding lithium? Now this is not a difficult one. This is an easy one. This is an easy one. Approved for absence seizure, it is not absorbed. Acha, B option was there. B option was there. Okay. B option was there. So do you remember what was option D? अनस्टॉपेबल और कितनी पढ़ाई करे। देखो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, देखो अभी क्या है ना, अभी आपका आईएनआई सेट का एग्जाम जिपमर, एम्स और पीजीआई मिलके बनाते हैं क्वेश्चन, और नीट पीजी का क्वेश्चन कौन बनाता है? नेट बोर्ड बनाता है। पहले जब नीट पीजी नहीं था, पहले उसको कहते थे हम ऑल इंडिया पीजी, और ऑल इंडिया का पीजी, एम्स का पीजी, दोनों का क्वेश्चन बनाता था एम्स। और एम्स जब बनाता था तो हर 5-6 साल में एक ऑल इंडिया पीजी का पेपर ऐसा ही आता था जैसा इस बार आया है ना, और स्टूडेंट्स अपना सर पीट लेते थे, क्योंकि एक होता है ना कि भाई हम इतना पढ़ के गए, इतना क्लास लगाया, उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन नहीं बने। पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई इस बार किसी का रैंक नहीं आया या रैंक 1 2 3 नहीं आया। रैंक आएगा, फिर भी आएगा। आपने नहीं सॉल्व किया तो बहुतों ने नहीं सॉल्व किया। बात समझ में रहे हो? तो ये हमारा एक सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। हमें लगता है कि भाई मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। अगर आप पूछोगे तो बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। एम्स, जिपमर, पीजे, इन लोग को भी दिखाना है कि भाई हम कौन है, राइट? अगर सब कुछ तुम आंसर कर लोगे हर सब्जेक्ट में, तो उनका ईगो कैसे सेटिस्फाई होगा? ओके। अच्छा, M790T, M790T mutation. All right. So again, as I said, see, whatever I'm saying is difficult. Such questions are not to be attempted if you have no idea what they're asking. You have to take in margin. See, whenever the paper is so difficult, how many MCQs do I mark in NEET PG or INICET? It actually depends upon how the paper has been asked. If it is a too difficult paper, right, we should not try to be adventurous with the paper. All right, guys, thank you. Thanks a lot. So this is an easy question. Dr. Binod Jaipal, yes, it's true. The more you study, the more you eliminate the options. That is a true option. And see, these competitive exams, they are not, I'm telling you again, they are not a measure of your caliber as a person, as a student. They are not, right? फर्क क्या है ए और डी में? भाई टी टू एम हो गया, एम टू टी हो गया। अरे ठीक है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। मैं जब स्टूडेंट था मेरे को भी बुरा लगता था जब पेपर नहीं सॉल्व होता था। बुरा लगता है, पर इतना इतना समझ लो कि अगर फार्मा के पेपर में जो भी डुएबल क्वेश्चन था, आपका मकसद ये था कि फार्मा का पेपर का डुएबल क्वेश्चंस आपने करना है। बाकी 19 सब्जेक्ट्स तो डिफिकल्ट नहीं था ना। इस बार सर्जरी आसान था आपका, जो है पैथोलॉजी, जिसमें उटपटांग सवाल पूछते हैं, इस बार पैथो में ऐसा उटपटांग नहीं पूछा जहां तक मैंने सुना है, राइट? Alright, which of the following is true regarding lithium? This is an easy one, guys. It is approved for absence seizure. बेकार ऑप्शन। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन स्टमक, तो कहाँ एब्जॉर्ब होगा भाई? स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। इट इज़ नॉट टेराटोजेनिक, सबको पता है टेराटोजेनिक है। तो देखो, ये आसान क्वेश्चन है,
So at least in this exam, you have to solve the easier ones, the difficult ones. If you can rule out, try to answer. If you cannot rule out anything, just forget about those. अच्छा, मैच द फॉलोइंग देखो, देखो मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है ना, अभी तक मैंने जो देखा है, मैच द फॉलोइंग दे आर इजी वंस. पिछले पिछले कुछ समय में, इन द लास्ट couple of years when INICET happens, at least I know from pharma MCQs, whatever match the following they ask, they're mostly on the easier side. So first of all tell me guys, ये मैंने इकट्ठा किया है. ये मैच द फॉलोइंग में तो एक तो इकट्ठा करने में जान निकल जाता है कि कितने ऑप्शन थे. तो ये मैंने इकट्ठा किया है. अब तुम लोग बताओ सही इकट्ठा किया है कि नहीं किया. I have collected these, so please let me know if I have collected them right or not. If this collection is right, then you know the answers are not difficult. Mirabegrone is a beta 3 agonist. Indicaterol is a beta 2 agonist. Betaxolol is a blocker of beta 1 primarily. Isoproterenol, it's a stimulator, agonist of beta 1 and beta 2. Column B had beta 1, beta 3, beta 2. Beta 1, beta 3, beta 2. No, okay. Column B had just beta, one option. One option was just beta. अच्छा, तो इसमें चलो ठीक है, इसको निकाल देते हैं. यहाँ पे सिर्फ बीटा था. और अगर अच्छा बीटा 1, और राइट. अच्छा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 था, और ये नहीं था. बीटा 1 2 नहीं था, बीटा था. बीटा था. ये था ना, ये था ना. दिस वाज राइट. जस्ट बीटा. ठीक है, ओके. अब देखो अब क्या आंसर होगा. अब यहाँ पे आंसर बनाने के लिए पहले मीरा बैकग्राउंड को निकाल दो. मीरा बैकग्राउंड बीटा 3. अब इसमें जो जो मिलता जाए उसको मार्क करते जाओ. इंडिकाटेरॉल जो है ये बीटा 2 का है. बिटाक्सोलॉल बीटा 1 का है. आइसोप्रोटेरेनॉल मार्क करना है बीटा. आइसोप्रोटेरेनॉल मार्क करना है बीटा. राइट. अब देखो यही बन सकता है बेस्ट, यही बन सकता है बेस्ट, यही बन सकता है, बिकॉज आइसोप्रोटेरेनॉल इज नॉट सिलेक्टिव फॉर any beta like beta 1 and beta 2. So this is the best possible answer, right? This is the best possible answer. Result positive for rhinovirus, patient shifted to ICU. देखो भाई, ये क्वेश्चन किसी ने मेरे को शेयर किया और मेरे को देख के ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को. कई बार जंगल में जाओ, बचपन में जाता था मैं जंगल बगीचे में फल तोड़ने के लिए, तो कई बार आधा अधूरा जो चिड़िया या गिलहरी फल खा जाती है ना, और आधा अधूरा मिलता है. ये क्वेश्चन ऐसे ही मिला है. तो आधा खाया हुआ क्वेश्चन है, आधा नहीं है. राइट. सो क्या है ये क्वेश्चन, क्या है देखो, मेरे तो ये क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है कि पेशेंट को राइनो वायरस हो गया, आईसीयू में ले गए. क्यों ले गए भाई? सो क्या क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन एटलीस्ट लेट मी नो व्हाट द क्वेश्चन वाज. तो भाई मेरे को तो ये मिला है, पेशेंट को राइनो वायरस आया, आईसीयू में ले गए. मैं बोला भाई ले गए तो अच्छी बात है, क्यों ले गए? ठीक है यार, कोई नहीं, कम से कम आसपास को तो बता दो कुछ, क्या हुआ था. ओके बताओ, बताओ एमए बताओ. ठीक है, बहुत बड़ा था, कोई बात नहीं. क्वेश्चन का सारांश तो बता दो, सारांश. चाहते क्या थे वो, चाहते क्या थे पूछना. ओके. राइनो वायरस पॉजिटिव था. से एक सार चेस्ट एक्सरे में क्या था?
चेस्ट एक्सरे हैड निमोनिया। अच्छा, निमोनिया में इनफिल्ट्रेट्स थे। अच्छा, क्रेटिनिन 1.5 था। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 45 था। एक्सरे कैसा था? पैची था कि वाइट वॉश था बिल्कुल, या कंसोलिडेशन था? अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा था। लंग्स कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद थे क्या? वाइट वॉश थे क्या? ठीक है, ऑल राइट। स्टेबल पेशेंट था। कंसोलिडेशन था, ठीक है। नॉट पैची, ठीक है। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बता दो, ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था क्या? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। टिकारसिलिन विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। टिकारसिलिन विद सिप्रो, ये तो बेकार है, कचरा है, ये नहीं देना। पाइपरासिलिन विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन क्या थे? ठीक है, कॉम्बिनेशन था। ओके, आई गॉट इट। कॉम्बिनेशन वाज देयर। व्हाट वाज द कॉम्बिनेशन? व्हाट वाज द कॉम्बिनेशन? और क्या था? और कुछ? एजिथ्रो प्लस सिप्रो था। एजिथ्रो प्लस सिप्रो था, ठीक है। एजिथ्रो प्लस सेफ्ट्राइक्सोन, वेरी गुड। एजिथ्रो प्लस एजिथ्रो प्लस सेफ्ट्राइक्सोन था, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन हो गया, एजिथ्रो था। सेफ्टाजिडीन प्लस एजिथ्रो था। अच्छा, सेफ्टाजिडीन प्लस एजिथ्रो। सेफ्टाजिडीन प्लस एजिथ्रो। अच्छा, एजिथ्रो एलोन भी था क्या? सेफ्ट्राइक्सोन प्लस सिप्रो भी था। अरे, इतना ऑप्शन बता दिया तुमने। सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्ट्राइक्सोन प्लस सिप्रो भी था क्या? एजिथ्रो, चलो, एजिथ्रो अलग ऑप्शन था। राइट, एक ऑप्शन ये हो गया, एजिथ्रो एलोन। एजिथ्रो प्लस सेप्टाजिडीन, एजिथ्रो प्लस सिप्रो। अभी तो 5 ऑप्शन हो गए ना। सेप्ट्राइक्सन प्लस लिवोफ्लॉक्सासिन, सेप्ट्राइक्सन प्लस लिवोफ्लॉक्सासिन, लो जी, एक और ऑप्शन आ गया। एजिथ्रो प्लस सिप्रो, एजिथ्रो प्लस सेफ्टाजिडीन। ऑलराइट, देखो यार, अब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इनमें कौन कौन से ऑप्शन थे। नो सिम्टम्स, चेकअप, CX are given, has no scrackles, gram culture, no organism, only few pus cells, no organism, only few pus cells, virus, rhino positive was found, what will you give? Okay,
ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। एजिथ्रो प्लस सिप्रो था, एजिथ्रो प्लस सेफ्ट्राइक्सोन था, एक एजिथ्रोमाइसिन था, चौथा क्या था? सेफ्ट्राइक्सोन प्लस लिवोफ्लॉक्सासिन, टिकारसिलिन भी था। अरे तो तुम तो 5-6 ऑप्शन बना दिए भाई, यूएसएमएलई का क्वेश्चन दे रहे हैं क्या? सी, जितना जितना तुम लोगों ने बताया ना मेरे को यहाँ पे, एज जितना वट एवर यू हैव टोल्ड मी हियर, इन दिस पेशेंट द बेस्ट एजिथ्रो प्लस सेफ्ट्राइक्सोन प्लस सिप्रो, एजिथ्रो प्लस सेफ्ट्राइक्सोन प्लस सिप्रो, ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन प्लस सिप्रो ये हो गया। देखो यहाँ पे the best option, if you ask me, as of now, whatever you have told me, the best possible answer is azithro only, as far as जहाँ तक ऑप्शन अभी तक बताया मैंने, एजिथ्रो प्लस सेफ्टाजिडीम, अच्छा एमॉक्सिक्लाब भी था क्या ऑप्शन में? एजिथ्रो होगा कैसे? एजिथ्रो मस्ट बी, एजिथ्रो वुड बी द बेटर आंसर हियर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखो ये एक और क्वेश्चन था, ये भी आधा अधूरा मिला मेरे को। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू मेरोपेनम, और फिर डैश डैश डैश, सेंसिटिव टू पाइपरासिलिन क्लेवुलिनेट, कोट्राइमोक्साजोल, ये था क्या? Was this the question, guys? बताओ, ये क्वेश्चन था सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट पीजी एंट्रेंस। भाई अभी नेक्स्ट का नोटिफिकेशन पता ही नहीं नेक्स्ट कब होने वाला है। वीकली फार्मा आई स्टार्ट, गैस आई स्टार्ट वीकली फार्मा, थोड़ा टाइम हो जाने दो। Yeah, I think azotro would be a better answer here. Resistant to aminoglycoside. Very good. GMS stain positive. देखो भाई, मेरोपेनम और एमाइनोग्लाइकोसाइड में स्यूडोमोनास नहीं हो सकता, स्यूडोमोनास इज सेंसिटिव बोथ। अच्छा, डी वॉज स्टेनोट्रोफोमोनास था क्या? ये था क्या स्टेनोट्रोफोमोनास? जॉनसन अब्राहम, क्रैप। ऑलराइट, देखो एसिनेटोबैक्टर भी नहीं हो सकता, बिकॉज एसिनेटोबैक्टर इज सेंसिटिव टू बोथ अमाइनोग्लाइकोसाइड मेरोपेनम। स्टेनोट्रोफोमोनास ही होगा, बिकॉज यही एक गंदा वाला गंदा वाला बैक्टीरिया है। देखो पहले जो क्या है ना, स्टेफोटोपोमोनास या सेनोटोपोमोनास जो भी था, तो ये स्यूडोमोनास, बुरकोल्डेरिया कैपेसिया, ये सब एक ही जाति के थे, बाकी बाद में इनको अलग अलग कर दिया। तो ये भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज स्टेनोट्रोपोमोनास इज ऑल्सो सेंसिटिव। यहाँ पे बेटर आंसर होगा आपका बुरकोल्डेरिया कैपेसिया, बुरकोल्डेरिया कैपेसिया। Which of the following anti-diabetic drug causes an increase in GIP and GLP1 levels? यही क्वेश्चन था, यही ऑप्शन थे। Which of the following anti-diabetic drug causes an increase in gastric inhibitory peptide and GLP1? ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस ये थे, आंसर ये, ऑप्शंस यही थे, क्वेश्चन यही था। Are the questions and the options same, guys? Which of the following anti-diabetic drug causes an increase in GIP and GLP1 levels? See, this was the question. Is basically they're asking about DPP4 inhibitors, right? DPP4 inhibitors, and you know
द आंसर वुड बी अग्लिप्टिन. द आंसर वुड बी अग्लिप्टिन. अच्छा, मेटफॉर्मिन नहीं था. सो व्हाट, विदिशा, क्या था विदिशा? अच्छा, क्वेश्चन मेंशनड एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग. अच्छा, एलोग्लिप्टिन था. चलो कोई बात नहीं, एलोग्लिप्टिन था ऑप्शन में. ऑलराइट, ओके. ओरल ड्रग था दैट रिड्यूस्ड प्री एंड पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज था. चलो ये भी ऐड कर दिया. हाफ इंजीनियर सर, वीकली फार्मा lectures keep in Hindi. See, half engineer, I can keep lectures in Hindi, but the problem is there are a lot of students from South India, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala. They don't know Hindi, so I have to think about them as well, no? ओके, ओरल था. जीएलपी जीवाईपी1 बढ़ाएगा तो ग्लिप्टिन आंसर होगा. HbA1c रिड्यूस्ड. अच्छा, HbA1c रिड्यूस था. ठीक है, वेरी गुड गाइस, थैंक यू. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स बाय हार्मोन, शायद हार्मोन था यहाँ पे ना. हार्मोन एक्स बाय जैक-स्टैट पाथवे. ये आंसर किया था क्या आप लोगों ने? आंसर किया था? हाँ, तेलंगाना भूल गया मैं. अरे वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. पर तेलंगाना मैं इसलिए नहीं बोला बिकॉज तेलंगाना में बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है. आंध्र प्रदेश, इफ आई कंपेयर आंध्र प्रदेश टू तेलंगाना, तेलंगाना लॉट ऑफ पीपल दे नो हिंदी. सी, GLP1 एंड GIP डुअल, दोनों का एगोनिस्ट जो है, दैट ड्रग इज tirzepatide. इट इज अ डुअल. GLP1 एंड GIP वो अलग ड्रग है. NB 3 दिन का एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे सक्सेसफुली? व्हाट इज योर ओपिनियन? देखो, मेरे को नहीं लगता वो कंडक्ट कर पाएंगे, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कंडक्ट करेंगे टू बिगिन विद. देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ. मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो सबसे पहला नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा ना, वो सिर्फ एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, और वो FMG एग्ज़ाम को लेंगे और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर के मिला करके एक एग्ज़ाम बना देंगे, जो कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है. आप एग्ज़ाम दो, आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा. तो वो 1 या 2 साल करेंगे, और जब करने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, अब हम कॉन्फिडेंट हैं, तो वो धीरे से क्या करेंगे, उस एग्ज़ाम के साथ नीट PG और INICET को भी मिला देंगे. देखो, आज नहीं तो कल एक एग्ज़ाम होने वाला है, राइट? कब होगा? अच्छा, डायग्राम वॉज गिवन. ओके, डायग्राम ऑफ जैक-स्टैट pathway was given, and okay, I got your point. Vinod Jaipal, excellent. All are GQ subtypes. All are GQ subtypes, though leptin is the answer, because see, it belongs to the cytokine receptors family. तो साइटोकाइन रिसेप्टर की जो फैमिली है ना, उसको बिलोंग करता है. एंड साइटोकाइन रिसेप्टर्स आर जैक रिसेप्टर्स. देखो भाई, हिंदी में तो एक्सप्लेनेशन अलग होता है, अलग होता है. आई अंडरस्टैंड दैट, वो अलग होता है हिंदी में. बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी, हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी. अदरवाइज देखो, मेरे लिए भी, आप मेरे को बोलोगे ना, तो आप पढ़ाओ, आपको किस में ज़्यादा अच्छा लगता पढ़ाने में, तो
अब मेरे को हिंदी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, तो मेरे लिए भी समझाना आसान है हिंदी में। बट हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पता है कि आपको एक लैंग्वेज हर जगह नहीं चलता, सो वी हैव टू बी लिटिल बिट प्रैग्मेटिक अबाउट दैट। ऑलराइट, सो लेप्टिन आंसर है गाइस। बाकी सारे जीक्यू से रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि which of the following is not responsible for teratogenicity due to thalidomide? ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। पर आसान क्या है जिंदगी में? कुछ भी नहीं। सो इट्स नॉट एन इजी वन, राइट? Which of the following is not responsible for teratogenicity due to thalidomide? Have you guys marked anything? Have you guys marked anything, guys? कुछ मार्क किया आप लोगों ने? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, इफ यू लेफ्ट इन एग्जाम, ओके ना। अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा ना, तो अभी कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर। भाई अभी तो मैं तो रैंक नहीं बांट रहा ना, तो अभी क्या आंसर हो सकता है? सी द आंसर इज डी, द रीजन बीइंग, सी दिस interleukins inhibition, it has anti-inflammatory effect, it has anti-neoplastic effect, it has anti-angiogenic effect, it has anti-oxidant effect। तो डी आंसर सही है, डी आंसर सही है। तो देखो ये पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया मैंने आपको कि ये इसके ये इफेक्ट्स हैं। लेकिन क्यों क्यों फोकोमेलिया क्यों करता है टेराटोजेनिसिटी, वो भी मैंने नहीं पढ़ा है, बिकॉज मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जाकर के इसके बारे में पूछेंगे, राइट? सो एनीवेज, बिकॉज आज की डेट पे प्रेगनेंसी में इसका यूज जीरो है, प्रेगनेंसी में इसका यूज जीरो है। तो अगर वो पूछें तो देखो यहाँ पे जो सेरिब्लॉन बाइंडिंग है, एंटी न्यूप्लास्टिक इफेक्ट, ये सेरिब्लॉन की वजह से है। एंटी एंजियोजेनिक ये बताया था मैंने आपको, इसकी वजह से हो सकता है, राइट? और फ्री रेडिकल मीडिएटेड डीएनए डैमेज भी हो सकता है, और इसकी वजह से भी सेल डेथ हो सकता है, राइट? सो एनीवेज, अगर आप तुक्का लगा करके देखो, ऐसे तुक्के ना अच्छे तुक्के होते हैं, ऐसे तुक्के हमने लगाने होते हैं, बट ऐसा तुक्का लगाने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मेरा मतलब यह है कि अच्छी तैयारी जब आप करते हो तभी आप ऐसे गैस, इसका हम कहते हैं एक एजुकेटेड गैस कहते हैं, राइट? एजुकेटेड गैस। अदरवाइज आप जो बिना पढ़े लिखे जाओगे तो गैस नहीं होगा, वो गैस होगा, फिर गैस, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड गैस, वेरी गुड। A child went to temple presented with raised blood pressure, lacrimation, sweating मतलब बहुत ज़्यादा sweating हो गया and prolonged priapism. What is used in treatment? What is used in treatment? Prazosin, epinephrine, anti-snake venom, right? तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव मार्क दिस करेक्ट। ये तो आप सब ने सही किया होगा मेरे ख्याल से, किसी ने गलत नहीं किया होगा, है कि नहीं? सो व्हाट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट? अरे बताओ भाई, क्या मार्क करके आए हो? देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बिकॉज लैक्राइमेशन, स्वेटिंग, ये सब देखोगे अगर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पर देखो, लैक्राइमेशन, स्वेटिंग देख करके लग सकता है कि क्या पता जो है कॉलिनर्जिक पॉइजनिंग हो। कॉलिनर्जिक पॉइजनिंग तो हो नहीं सकता, ऑर्गेनोफॉस्फेट कहाँ खाएगा? एक बार को आप कह सकते हो कि धतूरा खा लिया होगा, शिव जी के मंदिर में गया होगा तो वहाँ चढ़ता है भोग में। लेकिन धतूरा पॉइजनिंग अगर होगा तो धतूरे में तो लैक्राइमेशन, स्वेटिंग नहीं होगा ना भाई। धतूरे में तो सिक्रेशंस ड्राई हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगा, राइट? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो क्लू वर्ड था, एक तो है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना।
सो स्कॉर्पियन टॉक्सिन करता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और करता है हाइपरटेंशन, उसकी वजह से होता है पल्मोनरी एडिमा। स्कॉर्पियन टॉक्सिन पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड में ये कराएगा इरेक्शन, और इरेक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रोलॉन्ग्ड प्राइपिज्म हो सकता है। राइट, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई हियर द आंसर इज प्राजोसिन। प्राइपिज्म था। One option was probably stigmin. Yeah, I understand. It must be. उन्होंने देखो फाइजोस्टिग्मिन दिया होगा, कई लोग दतुरा समझ के फाइजोस्टिग्मिन के ऊपर कूद जाएंगे कि ये आंसर है, पर ये आंसर नहीं है। Which of the following is a rare but सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन? ए ग्रानुलोसाइटोसिस, आप सबको पता है सबसे सीवियर है, एंड इट इज दी मोस्ट फेटल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन। अब जल्दी से बता दो अलग दूसरे ऑप्शंस क्या थे, थोड़ा सा दूसरे ऑप्शंस के बारे में ज्ञान दे दो मेरे को, और क्या क्या ऑप्शन थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर बट सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन? ए ग्रानुलोसाइटोसिस, ये आंसर था। मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा ये। और क्या था? व्हाट वर द अदर ऑप्शंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर बट सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन? फिर बताओ क्या ऑप्शन थे। और सुइसाइड, ठीक है, सुइसाइड एक ऑप्शन था। अच्छा, लास्ट क्या था? दैट रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग। अच्छा, सुइसाइडल टेंडेंसी दूसरे देखे नहीं, बढ़िया है, बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो यार, आंसर सही करना जरूरी है। अ पेशेंट वाज गिवन मॉर्फिन ड्यूरिंग सर्जरी, इट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, विच ड्रग शुड बी गिवन? ये तो ये तो रूटीन सा हो गया है, इस क्वेश्चन के बिना कोई एग्जाम पूरा ही नहीं होता आजकल। नालोक्सोन। तो देखो यहाँ कुछ बताने लायक है नहीं, मैं कुछ मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम बता सकते हो तो ऑप्शंस बता दो, बी सी और डी में क्या था? ए नालोक्सोन था, बी सी और डी में क्या था तुम बता दो, नहीं तो मैं डाल दूंगा अपने तरफ से। क्या था? ए नालोक्सोन था, ये भी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने ऑब्वियसली। मॉर्फिन है, नालोक्सोन है, और देखने की ज़रूरत क्या है कि नहीं? पेथिडिन। और कुछ? और कोई ऑप्शन? हॉट क्वेश्चन, नालोक्सोन नहीं याद, कोई बात नहीं। देखो भाइयों, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं देखे कोई बात नहीं। देखो भाई, कटरीना कैफ मेरी फेवरेट हुआ करती थी, पर अब नहीं रही, अब नहीं रही, अब शादी हो गई ना उसकी भाई, तो शादीशुदा अब नज़र डालना अच्छी बात नहीं है। तो अगले साल जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ना, उसमें कटरीना कैफ चेंज हो जाएगी और उसमें नोरा फतेही आ जाएगी अभी। अच्छा, फोमेपिजिल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब मुझे ये बताओ कि और और कोई क्वेश्चन और कुछ बच गया तो बता दो भाई, मैंने कुछ कवर ना करा हो जितना मेरे
जितनी मेरी शक्ति थी मैंने उतने क्वेश्चन जितना हो सकता था मैंने इकट्ठा कर लिया। भाई नोरा फतेह ग्रेट चॉइस तो ऐसा बोल रहा है कि अब मेरे को फोन करने वाली हुआ है। भाई हम तो चॉइस ही कर सकते हैं, उसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता है ना। क्यों भाई आयुष, तो बताओ और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? कुछ क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ तो बताओ। जॉनसन अब्राहम सर, एंटीडोट एंड ड्रग ऑफ चॉइस सेपरेट नोट्स आइडियाज वाज ग्रेट। वो मदद करता है भाई, मदद करता है फॉर एनी सब्जेक्ट। यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट टू कैप्चर द सब्जेक्ट, सिंस फार्मा इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट वी नीड टू डू सम थिंग्स। ग्राफ कैंसर क्या होगा? अरे नाम तो बताओ, हमें खुद ना पता क्या होगा। अब इतने सारे बाबा जी लोग का नाम दे दिया वहाँ पे, अब हम थोड़ी जानते कौन कौन है बाबा जी लोग। सबका ग्राफ का नाम दे दिया है। देखो भाई हम भी क्या, हम फार्माकोलॉजिस्ट हैं, हम भगवान थोड़ी ना है। हम भगवान नहीं है भाई। बताएंगे, देख के बताएंगे बाद में क्या है, मुझे खुद नहीं पता यार कौन बाबा जी ने क्या बनाया था। से आई विल स्टार्ट वीकली फार्मा। आई विल स्टार्ट सून, आई विल स्टार्ट गेस, आई विल सून, मैं जल्दी ही शुरू करूंगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, आज का दिन बहुत मुश्किल रहा। जाओ आराम करो, मज़े करो, नेटफ्लिक्स देखो, पानी पूरी खाओ, आइसक्रीम खाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मन आए वो करो। राइट। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे आप सब लोग के साथ एक और लाइव सेशन। टेक केयर।